Thank you everyone for joining us today to the Digital Disruption online webinar. Today we have four panelists और उसमें हमारी कोशिश ये थी कि पैनलिस्ट से हमें एक डाइवर्स ओपिनियन और व्यू मिले। हमने लोकल ब्रांड्स जो बनाए जिन्होंने उनको भी लेकर आए और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स रन कर रहे हैं पाकिस्तान में एज अ फ्रेंचाइजी उनको भी लेकर आए हैं। सो I'll briefly introduce all our panelists and then I would request our panelists for their own introductions, things that I don't know. So Saif, I'll start with Saif. Saif has run a brand for almost 10, 11 years in Pakistan, Char Central के नाम से. Started in Islamabad, had 3, 4, 5 branches and then scaled down. And then he exited the business. He sold it off. And Saif currently works for Amazon in Dubai. So Saif is a technologist by training, economist by training. So इनको बुलाने का मकसद ये था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मिले what's happening, because if you have run a restaurant, आप हर मार्केट में उसी नज़र से चीज़ों को देख रहे होते हैं। Mubasher bhai is runs Subway in the central region. So लाहौर में जब भी आप Subway जाते हैं तो उसमें मुबशर भाई का काम होता है, हाथ होता है। और उसकी सारी expansion in the last 10, 11, 12, 14 years से he's been part of Subway. So he has seen the growth, challenges and all of it. Then we have Tanzeel. Tanzeel is the founder of Sweet Cream, ice cream brand that all of us have seen. Tanzeel have scaled it to more than 30 stores, I believe 30, 35 stores in the last 4 years. Exact numbers Tanzeel abhi khud batayenge. And then we have Gohar with us. So Gohar has built an iconic brand in Lahore, and we are hoping inshallah to see this at a national level. Gohar has built Johnny and Jugnu. So started from scratch, scaled it, built it, running it successfully. So that's the introduction. So I'll start with Tanzeel. Tanzeel, अगर आप बताएं कि F&B space में आना कैसे हुआ और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इस स्वीट क्रीम बनाने से पहले क्या किया और फिर हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन स्वीट क्रीम? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सर, स्वीट क्रीम की जर्नी जो है ना, इट्स प्योरली आउट ऑफ नीड। वो मैं आता हूँ उस पर कैसे किया। उससे पहले मैंने क्या किया। सो आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कोयटा, और उसके बाद मैं कैडेट कॉलेज गया, और उसके बाद जो है आई एंडेड अप इन लम्स फॉर माय एजुकेशन। खैर, वो सारी जर्नी एक तरफ थी। उसके बाद मैंने बिजनेसेस करना स्टार्ट किए। इट्स बीन एन एंटरप्रेन्योर। शायद पहला बिजनेस अनसक्सेसफुल रहा, दूसरा अनसक्सेसफुल रहा, तीसरा अनसक्सेसफुल रहा। एंड देन वन डे आई वाज विद माय किड, और मैं उसको लाहौर सफारी लेके गया, और उसने मुझे बोला, बाबा मैंने आइसक्रीम खानी है। एंड आई लुक एट द आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम बना रहा था, तो मैंने कहा यार इससे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं अपने बेटे को शायद ना खिलाऊं एट वन पॉइंट इन टाइम। एंड मैंने स्टार्ट वर्किंग ऑन आइसक्रीम वीकेंड्स पे। संडेज को यूजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आइसक्रीम्स के किस तरह आइसक्रीम बनाई जा सकती है, क्या अच्छी रेसिपीज हो सकती है, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, लोकल प्लेयर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। इट्स बैक फॉर 5-6 years बैक। उस टाइम पे कोई भी इस तरह ब्रांड्स नहीं होते थे। तो खैर आई केम अप विद दिस फॉर्मुलेशन और ये सारी चीज़ें, और वीकेंड्स पे काम करके और अपने लम्स के दोस्तों को बुला के ट्राई टेस्ट करा के आखिर में ये पोजीशन थी। वो कहते थे भाई तेरे पास नहीं आना, क्योंकि तेरे पास आना है तो हमने सिर्फ मीठा ही खाना है, तो हमने कुछ और खाना है, तेरे पास नहीं आना। तो खैर स्टार्टेड अप वेरी स्मॉल। हमारी पहली आउटलेट लाहौर में अल्लाह चौक पे है। इट्स टोटली हार्डली 200 स्क्वायर फीट आउटलेट जो हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि वो हम सिर्फ एक आउट ऑफ वो पैशन कर रहे थे कि यार अपने बच्चे के लिए मैंने एक अच्छी चीज बनानी है जो मेरा बच्चा खा सके। और आज भी स्वीट क्रीम की जो एक प्रायोरिटी है वो ये है कि हम वो चीज़ खिलाना चाहते हैं जो हमारे या बच्चे खा सके या माँ बाप खा सके। सो उसमें अगर कोई भी अप एंड डाउन है तो हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। सो पीपल डू नॉट नो, बट हम काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। और कभी इस तरह की चीज़ आ भी जाए तो यू आर फील फ्री कि हमें बताएं, ताकि हम उस चीज़ पे फौरन एक्शन ले सकें। हैपन टू बी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हम नहीं थे, हमारे जैसे बहुत सारे और माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिलानी थी। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी गेट द रिस्पॉन्स। और वहाँ से जो है हमारी एक जर्नी शुरू हुई। एंड करंटली वी आर 62 आउटलेट स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड 5 इन द पाइपलाइन। तो एंड वी आर डेमोग्राफिकली अक्रॉस पाकिस्तान। सो वी आर इन नॉर्थ, वी आर इन साउथ, वी आर इन सेंटर, वी आर इन एवरीवेयर।
ठीक है, तो सेकंड टीयर सिटीज हमने कवर कर ली हैं काफी सारी। फर्स्ट ईयर सिटीज में हम काफी स्ट्रांगली बिल्डअप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जर्नी वाज नॉट दैट स्मूथ, कुछ कोरोना भी आया उसमें। उसमें बाकी सारे चैलेंजेस भी आए, कभी रात को जल्दी बंद होने वाले आए, कभी देर आए। बट इट्स अ गुड जर्नी, वी ग्रोथ इन दिस जर्नी, तो इट्स अ गुड फॉर अस। सॉरी, वेरी इंस्पायरिंग तंजील। हम आई थिंक लास्ट हमारी बात हुई थी 1.5-2 साल पहले, उस वक्त 30 का कोई नंबर था। माशाल्लाह विद इन द लास्ट Yes. 18 months आई बिलीव इट्स नाउ 60+। सो कंग्रेचुलेशंस। सो गोहर, आपकी तरफ आते Thank हैं। you. कुछ पर्सनल बैकग्राउंड, कैसे शुरू हुआ जॉनी एंड जुगनू, क्या स्टोरी है पीछे? Assalamu alaikum, guys. Sair, thank you again for having me here. I'm very happy to finally see that we have some sort of a forum where people who are interested in the F&B sector gather together. I think a lot of the participants would agree that we don't have a lot of forums, we can meet each other, learn from each other. So just being here, it's a very refreshing activity. So I'll give a quick background. I don't come from a business family. My family generally is all either civil servants or in the corporate sector. किसी तरीके से लम्स पहुंच गया. That's another chapter in my life how I ended up at Lums. But during the 4 years there, I was exposed to very different sort of mindsets and very different thoughts. And initially, the mindset that I thought was the one I should adopt was that a corporate job is the dream. Fortunately, during my last year at Lums, I was able to intern at Procter& and Gamble, which I understood was a very coveted internship. But during my internship over there, I had a very horrible time. And I didn't feel like I had the room to do the things I wanted to do. So finally, Lums में decide किया that I want to do something on my own. I didn't know कि क्या है, but ये decision था कि मैंने वो करना है, and I needed the space to create something. Right after graduation, I started a few businesses. When I say I started a few businesses, most of them were without any capital. So we started a marketing agency called Shake Chili. Well, it was actually a branding agency, and we felt like branding agencies Pakistan में exist नहीं करती हैं, but marketing की काफ़ी ज़्यादा agencies exist करती हैं. Um, so that was the main idea. I felt like branding was my passion. But it was very difficult to find clients who would be willing to work with a very new team. And then honestly, I felt like the work was a bit tedious as well. It was very difficult to convince people to take a risk on their brand. I mean, marketing, sales के अंदर सब interested हैं, but जब आप उनको brand building की बात करते हैं, तो it's a tough one. And how I understand now, entrepreneurs, brands are their babies, and they're very, very attached to them. So I think 2 months into graduation, after graduation, an opportunity came up with my partner, Dr. Adnan, to start off a fast food restaurant. And it wasn't a very serious sort of idea. The whole thing was just to keep ourselves busy, and our mentality was to keep trying new things. So हमने June के अंदर 2014, the year I graduated. So 2 months later, we started Johnny and Jugnu in Christian Nagar. And उस वक्त हमने कोई 3 1 लाख रुपए की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी. Um, साल एक चलाया, उसमें कुछ भी नहीं हुई. हमें समझ आई क्या करते हैं. पूरा साल उसमें नुकसान ही किया. खैर वो उसका कोई 7 1 हज़ार उसका किराया होता था, एक फ्रायर होता था. ओएल एक्सेस सेकंड हैंड हमने खरीदा था. एंड it wasn't like a very heavy capital investment, but it took a lot of our time. तो we used to sit there for 6 hours a day. शाम को चले जाते थे. उसको बंद किया. I think about 8 months down the line, we decided that wasn't working out, and we decided to pick something else up. And we started discussing doing something maybe in the consumer retail industry. F&B में कुछ कर लें. Food delivery platforms उस वक्त सिर्फ this is early, so food panda नहीं होता था. There was another player, मैं भूल गया हूँ वो कौन थे. Road runner होता था. So we thought that maybe we'll do something similar. करते कराते I don't know how we ended up deciding कि हमने जॉनी जुगनू दोबारा शुरू करना है. I think it came from a passion of being customers first and operators second. So हमने फिर डबल सी के अंदर जॉनी जुगनू दोबारा खोला. That's the one that people know about. Again, I think we put in about a 300,000 rupee cash injection. छोटी सी दुकान थी, 200 square feet, जिस तरह very similar to how Tanzeel bhai started. And it's been 8 years since. So Alhamdulillah, right now we're running 5 stores, one dark store, and we just opened a new test kitchen.
So it's been a very interesting journey, ups and downs, but never a boring day. Yeah, thank you, Gohar. And your brand has always stood out. That tells you about your marketing and branding background. Uh, जी सैफ सैफ अगर आप अपना थोड़ा सा बताएं, how did you start your brand and what's been your background and how Sure. has it been I'll, running it remotely for yeah, a sure, for sure, a sure. So I'll just keep it short. Again, like Gohar, don't come from a business background. I came back after leaving a PhD program, and I wanted to come back to Pakistan to just do something. I wasn't sure what it was, just something of my own. And long story short, we stumbled upon like that there was a need for like good restaurants in Islamabad, and we just started testing out burgers in our apartment. Friends aate the, khate the. We thought that we'd stumbled upon something, and I think the main idea back then was that McDonald's and these other franchises, there weren't other local food players in the market. All the international brands, they had to pay a certain royalty, and I thought that we had this comparative advantage. Like if we could use local ingredients, we get more margins there. And secondly, we won't have to pay royalty. So that's sort of like the idea. Use local ingredients that are better. And secondly, try and undercut the international brands. Hardee's, McDonald's were the major ones back then by uh, due to the fact that you don't have to pay royalties. So that's how we stumbled upon it. And yeah, it's been up and running for over 12 years now. Started off with, I think, overall 3 to 4 lakh key investment, just like Gohar got a ghost kitchen in Islamabad. Yeah, and it's been going strong since then. Thank you, Saif. Mubasher bhai, we normally don't see Lums MBAs joining the F&B industry, and when we talk to brand owners, one of the problems they say कि talent नहीं है available. तो आपने Lums MBA करके फिर F&B को कैसे join किया? So, Assalamualaikum everyone, and Said, no doubt, it's a very good initiative because when I came to know from your team, so I was surprised that there is some kind of this kind of a channel exists where the local market, everyone shares their success stories and everything. So, Sahir, ऐसे है कि जैसे just a little bit giving you my background. So, I'm a pure from an engineering family. So my father and everyone was from the engineering family. I never thought of going into the MBA. So it was my friend's idea. He pushed me to start this MBA program and everything. So what is about the Subway story is, so what happens is one of my friend whose brother was in Subway US office. So Subway was considering in 2009, they were considering to roll out from Pakistan instead of they were just thinking to shut down their operations because the operations and everything here, because they were considering that Pakistan is not a health conscious market and they are not sandwich market. So and second thing is the franchisee at that time was not very compliant to the operation specifically for the Subway international operations, everything. So what happened is they were thinking about it to roll back from Pakistani market because they were not doing good at that time. So at that time, one of my friends' brother, he was there in US office. They have somehow in one place we had a meeting together with the owner of the Subway with the Fred DeLuca, and then we had started discussion with each other on how we can take it onward. At that time in 2009, when I joined Subway, there was only 21 locations in Pakistan at that time. Now we are 108 locations out in Pakistan. So at that time, I joined as an country manager, and then after that, after 3 years, I just tried to revamp, restructured, rehired our partners after that. So you were mentioning that the MBAs were, not moving into the F&B market. So what change I have done is, so I bring another partner for the North Territory who was also MBA, you know him, Usman Abul. Then I bring another partner for South Territory who is also an MBA for Imran Hussain, and you know it. So after that, our growth is very good. I mean, and secondly, what we are focusing at the moment is we're trying to bring in the professional entrepreneurs who have been doing job since long in the corporate sector, and they wanted to do it by something by themselves.
They wanted to become their own boss. So these kind of blood we are just bringing in, and then Alhamdulillah, now we are 120-year odd locations. Perfect. Thank you. I think we'll start with thank you for very detailed introductions. I think it's very important to have the background. I'll start with how was 2023? What did you guys do? Like what was your focus in 2023? So Mubasher भाई, I'll start with you. So क्या किया, किन चीजों पे फोकस किया और कौन सी चीजें थी जो हो गई अचीव और कौन सी नहीं हुई? So 2023, to be very honest, is just like a roller coaster kind of a thing. I would, if I compare it from last 15 years, I would say 2020 was one of the best year for us. It is a one of the very good achievement we have done in terms of revenue, AUV, everything. However, in the last year we were having two kind of issues. Number one, we were having a cost of doing business was going very high, and there have been a fluctuation in the, because the brand like us who are vastly dependent on the imported items basically. So kya problem aana tha, because if you remember in 2023 there have been import, the duties were increasing and everything. The problem with us like that our menu mix was having a in terms of sandwiches or menu mix, there is around 25 to 26% items we are dependent on the imported items. So in 2023, I would say we were keep on doing the troubleshootings and firefighting kind of a things. We were trying to, because we cannot increase the price at one go. So we have been making some kind of strategy and innovation and everything to how to keep our cost in control, how to survive, and how to maintain the profitability. So 2023 was a some kind of a roller coaster kind of an experience for us, but things are now moving in the right direction. It's more stabilizing now. We will come to 2024, Yeah, but just to set the context के 2023 कैसा था? एक क्वेश्चन ये है कि एज अ ब्रांड, तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी काम कर रहे थे आप लोग, यानी इन द सेंस कि जो एक्सपोर्टेड चीजें हैं उनको लोकलाइज करना था? बिल्कुल काम कर रहे थे, बिल्कुल काम कर रहे थे, लेकिन देखिए एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, ये वो चैलेंजिंग थिंग वाज, क्योंकि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल अमेरिकन चेन, अमेरिकन ब्रांड, देयर आर सो मेनी चेक एंड बैलेंसेस, because they need to, from recipe control to non-disclosure agreement to then testing, then trial and everything. You cannot, I mean, no matter how much you try, you cannot shorten the process. That was the main problem for us. So for example, we have moved from there was a ban from import from India. We were getting the spicy from India. So we then worked very closely with one of my class fellow as well, Zishan from Dipit. So we have developed the spices. But to develop the spices, we need to bring in the ingredient from Germany again, because everything was not available here. So हम substitution की तरफ बिल्कुल गए हैं, लेकिन it has taken a lot of our time, lot of our energy, and lot of our energy, time, and effort and everything. So हम substitution की तरफ गए हैं. Plus also we were also focused on the replacement of the products as well. Few ingredients, a few sandwiches which were 100% imported items, we just tried to replace it with the best possible local item. So उस तरफ भी हम लोग गए हैं. बिल्कुल ठीक. Tanzeel, how was 2023? What was your focus? As Mubasher भाई said कि ये रोलर कोस्टर राइड है. खैर हमारे लिए तो 2023 नहीं, 2018 से 19 was हमारा लर्निंग फेज. उसके बाद से कोरोना फेज, दैट वाज वन चैलेंज. फिर उसके बाद मेरे ख्याल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, डूइंग बिजनेस इज ऑलवेज अ ट्रबल शूटिंग. इट्स नॉट इजी थिंग टू डू बिकॉज रेगुलेशंस, और मैं तो खैर इसको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है डूइंग एनीथिंग. सो एवरी सिंगल डे देयर इज सम फॉर्म ऑफ क्या नाम है, चैलेंज, जो आपको सुबह उठ के पता चलता है अच्छा यार ये भी आ गया है आज, ठीक है, और वन वे और द अदर इट कीप्स ऑन कमिंग, इट कीप्स ऑन कमिंग, ठीक है. सो आप जो बिजनेस है, हम उसको, मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ, एक चैलेंज लेता हूँ कि कल क्या चैलेंज आएगा. और अब तो खैर वो टीम भी इतनी ट्रेन हो गई है कि कल क्या आना है
और किस तरह जो है हमने उसको फेस करना है। बट यस, शुरू में हमें प्रॉब्लम्स होती थी, शुरू में हम भी इतने वो नहीं होते थे। अब तो जिस दिन पर कोई इशू ना आ रहा हो तो हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, यार आज कोई इशू आया नहीं है, खैर हो, सब कुछ ठीक तो है, रीचेक करो कहीं और मसला तो नहीं हो रहा। तो थिंग्स कीप ऑन कमिंग, एंड आई थिंक हम लोग इतने अडेप्ट कर गए हैं कि हम अब उस चीज को खुद ही ले रहे होते हैं कि यार नेक्स्ट क्या आ सकता है, वो हम चेस का एक मूव पहले से सोच रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये आ सकता है तो इसको इस तरह करने कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी प्ले फॉर अस एज वी आर ग्रोइंग, एज आई टॉक टू यू बिफोर की, तो हमारे लिए तो शायद चीजें बेहतरी की तरफ ही हैं, चाहे 23 है, चाहे 20 था, 22 था। बिकॉज जब कोरोना आया तो हम टेक अवे और डिलीवरी थे, मॉडल पे थे, तो इट वर्क गुड फॉर अस। जहाँ पे रेस्टोरेंट सिटिंग डाइनिंग एरियाज बंद हो रहे थे, हमारा टेक अवे पे जो है वो कस्टमर स्विच हो रहा था, तो मे बी देर देर इज दिस थिंग जो हमें लीड मिली। सेकेंडली, क्योंकि हम टेक अवेज पे हैं तो हमारे जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो कम है देन द अदर रेस्टोरेंट्स जिनके पास डाइन इन है, तो वो भी है। 23 में कुछ एक रेगुलेशन आई है जो थोड़ी खतरनाक थी कि आपने रात को 10 बजे बंद कर देना है, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से उसने काफी ज्यादा हिट किया होगा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस्ड। ठीक है, और ये लाहौर रीजन में ही है सिर्फ। हाँ, हमें सपोर्ट कहाँ से मिली, बिकॉज वी वर अक्रॉस पंजाब और केपीके और कराची, तो उन एरियाज ने हमें सपोर्ट कर दिया टू कीप रनिंग बिजनेस ओवर हियर। बट ये दीज थिंग्स कीप्स ऑन कमिंग, और अभी भी वो चल रही हैं चीजें कुछ ना कुछ, तो इट्स अ गुड वो। बट ये है कि चैलेंजेस हमारे 23 हो, 22 हो, 24 हो, प्लस सेकेंडली एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है, और जो इम्पोर्टेड गुड्स की जिस तरह बात की है मुबशिर भाई ने, इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि हमारी चॉकलेट्स हैं, आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सॉसेज हैं, वो सारी इम्पोर्टेड है, ठीक है, सो वहाँ पे काफी सारी चीजें जो हैं, वी सफर्ड अ ह्यूज हिट, क्योंकि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तो कहीं नहीं, हमारे जो रुपये की डिवेल्युएशन है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, तो दैट हिट अस हार्ड। और हम क्योंकि एज अ बजट ब्रांड मार्केट में अपने आप को प्लेस करते हैं, तो हमें उस प्राइसेस को स्टेबलाइज या कीप ऑन रनिंग करने में बहुत ज्यादा इशू हुआ। बट वी सॉर्टेड सम ऑफ आर विद आर वेंडर्स, ठीक है, काफी सारी चीजों के ऊपर हमने जो है वो उनसे काफी डिस्काउंट्स लिए उस चीज को स्टेबलाइज करने में, बिकॉज हमारी शायद हमारी कंजम्पशन बढ़ रही थी, सो दे विल बी जेंटल एनफ या काइंड एनफ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, एंड वी आर हियर अल्हम्दुलिल्लाह एंटरिंग 2024 इन अ गुड नोट। बिल्कुल ठीक। गौहर, स्ट्रेटेजी वाइज क्या फोकस था 2023 का, और क्या वो अचीव हुआ, और चैलेंजेस क्या आए? Yeah, well, 2023 was a very inward-looking year for us. I mean, you were just coming out of the COVID period. There's a lot of political instability on the backdrop as well. Um, पाकिस्तान का एक वो बूम बस्ट साइकिल चलता ही रहता है। खैर इस बार जरा वो nobody was expecting कि वो बस्ट इतना miraculous और इतना स्पीड से आएगा और वो bottomless भी होगा। तो that was a problem, yes. The thing is that we we didn't really have a lot of expectations on the fact that the economy uh, will stabilize. So our strategy was a bit different. जिस स्पेस के अंदर हम ऑपरेट करते हैं उसके अंदर हमारे कंपेटिटर्स जो लार्ज स्केल कंपेटिटर्स हैं they've had a very interesting strategy as well. वो प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटजी से ऑपरेट कर रहे हैं। आप यूएस डॉलर पैरिटी के साथ अगर देखें तो लॉट ऑफ द बिग प्लेयर्स जो हैं they're not increasing prices, and that creates a lot of challenge for the smaller players. So our strategy was very simple. To be honest, we knew that this is not a fight we want to fight. They have the deeper pockets, so if we start fighting on margins, I mean, we'll win, but at what cost, right? If we, at the end of the day, you don't have enough money in the organization to grow, it's not going to work out. So our strategy was a bit different. We figured out that we're not gonna play the game that the competitors are playing. We're going to increase prices and make sure that हमारी financial viability exists करती है. Now the thing was that when you want to do that, it creates a lot of other challenges because and what we've seen in 2023 is that there's been a huge shift in the type of customers जो हमारे पास आ रहे हैं और उनकी need हमें नजर आती है कि change हुई है. So our strategy was to sort of re-engineer what the product service mix is. We had a very specific focus on a few things that we wanted to improve, and overall, of course, बहुत ज़्यादा challenges हैं from the overheads, electricity being one that I think is going to be the one जिसके अगले साल सब बात भी करेंगे, but पिछले 23 में भी उसने तंग किया है.
and input की availability, shortages. I mean, even if, for example, people think a local player है, so we have local ingredients, but the thing is कि हमारे vendors के ingredients तो imported ही है, right? I mean, Pakistan, I don't know what it produces जो restaurants तक पहुंच सकता है besides wheat. So, आपको shortages तो आते ही हमारे अगर हमें डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हमारे वेंडर को तो आ ही रहा है. But our strategy worked out. So Alhamdulillah, we had about a 20% growth, same store volume in a 1 year period, while taking price increases which were happening at the worst part of it were happening on a 2 week interval for us. So all in all, the team is थोड़ी सी अब वो जरा war veterans बन गए. We're very accustomed to this, and I think our analysis is, I feel like we'll have to do it for a while अभी आगे भी. बिल्कुल ठीक. Let's talk about 2024. Like क्या expect कर रहे हैं गौहर आप, कैसा होगा economic instability? एक तो general economic prediction क्या है आपकी, और उसके हिसाब से what's the strategy? अभी slow जाना है या expansion शुरू करना है? Where does the brand stand right now? And how do you see economic opinion क्या है आपका? So, yeah, economic opinion, I guess we're not the right people for it. You just have to listen to what everybody is saying who know what's going on. When you look at the fundamentals of the Pakistani economy, I mean, there are no chances of anything coming down, right? When you look at what the government is talking about, and the best case scenario present होता है वो ये है कि चीजें control में आ जाएं. So forget that things will come back to the prices and rates they were at. That's a fool's paradise. Control is the best case scenario इस वक्त कि ये जो escalation है ये काबू है. But when you look at the external of parties जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिव्यू करती हैं, I mean आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो इस वक्त ठीक ही नहीं हो सकते. इन्फ्लेशन नहीं नीचे आ सकती, आप जो भी कर लें. आपकी गवर्नमेंट बोरिंग ही इतनी ज़्यादा है कि economics 101, when the government's printing money and borrowing from the banks, inflation is up and hence आपका interest rate will stay up. That creates a lot of challenges because cost of capital ka masla hai. We're not expanding as much as some of the people who are sitting over here, but when you're getting a 25% return from the bank, I mean, who on earth wants to take any other risk, right? So I feel like cost of capital ka ek severe concern hai, that's going to hamper growth. The other thing is, I think input cost में electricity is going to be a big one next year and the year moving forward. So उस पे कुछ देखना पड़ेगा क्या है. And then because petrol and electricity go into everything coming in. So from ingredient pricing to आपकी salary and labor. I mean, it's sort of like I don't want to paint a bad picture, but it's sort of like a multi-organ failure, right? So आप वो एक चीज दूसरे से linked ही है, वो सारा बस एक उसमें चलता रहता है. Now, that being said, my personal opinion is that this is the best time to go aggressive. Just because the fact cost of capital all time high, and even अगर आपने capex भी लगाना है तो आपका equipment बड़ा महंगा है और हर चीज महंगी है. The thing is, it's going to keep going up, right? So the sooner you do it, the better you are at it. That being said, one of the things जो हमने 2023 में भी हमने उस पर काम किया था और मैं अभी भी believe करता हूँ, for a lot of restaurant owners हम कभी-कभार ये भूल जाते हैं. You're not the only one going through it, right? So ये cost सबको लग रही है, and sooner or later, no matter how much किसी की pockets कितनी deep हैं, economics 101 उनको पकड़ लेती है. तो you have to realize कि you're not the only one, and what that means is that even 2023 की हमारी strategy ये थी that we knew कि हम price increase लेंगे, we lose customers, and that is a fact. A lot of the customers we have, उनकी frequency कम हो गई है because they just can't keep up with the rate at which our prices are going up. But एक पूरा वो पैकिंग ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, एंड वी न्यू कि जहां हमारा कस्टमर किसी और के पास जा रहा है वहां किसी और का कस्टमर हमारे पास भी आएगा, बिकॉज वी आर नॉट द ओनली वंस जिनको प्राइस का इम्पैक्ट लग रहा है. द ब्रांड जो हमसे और 2-3 टियर ऊपर हैं, जो ज्यादा प्रीमियम टियर है, वहां भी प्राइस इम्पैक्ट आएगा. सूनर और लेटर दे विल हैव टू मेक द डिसीजंस, एंड देयर विल बी मोर कस्टमर्स इन द मार्केट दैट यू कैप्चर. So that's the strategy. I think moving forward भी यही है. जब ये सारी चीजें आती हैं तो there's more customers in the market that you can capture. You just have to realign the business. बिल्कुल ठीक. सैफ, मैं आपसे समझना चाहूंगा, you ran a business for 10 years and then you exited, right? So Right. what were the highs and the lows in that 10-year journey, and what made you decide finally कि यार बस हो गई है या और नहीं चलाना? What was that? Right.
Okay, so that requires me to think a bit. But I think like when you talk about the highs, there is some innate joy in like cooking good food and having people come over and them having it. I think like Gohar and Tanzeel could probably relate because they're both, small scale enterprises that have now scaled. लेकिन जो initial joy होता है probably if Gohar is to share his own experience, like the first 6 months when they were spending like half the time, like 6 hours daily in the kitchen, he probably would have fonder memories and recollections of that time, right? Like when he's now scaling, I don't know how many branches. So I think वो एक innate joy है, something that you wanted to do, something that you were interested in, that doesn't really have, any monetary value attached to it. So yeah, so that's been a great high. The second thing is, I think we're also one of the earlier ones, so uh, who entered like in the food industry, and we've seen people also venturing out, starting their own food ventures or going into businesses अपने seeing कि यार अगर कोई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. So I think that's been pretty interesting to see. And I think like if you look at it like back when we graduated versus now, going on an entrepreneurial path is looked at differently because of various reasons, right? तो I think yeah, वो है कि देख के कि हाँ उसके बाद और लोगों ने भी ये जर्नी ली है और उसमें they've been successful being part of their journey as well. That's also been something that I have really enjoyed. Coming to the lows, so I think navigating business in Pakistan, जो cost of doing business है, जो और tangible costs तो हैं ही, जो बाकी intangible costs हैं, uncertainty, etc., that you have to deal with on a daily basis, which I think local operators को ज़्यादा मसले होते हैं as opposed to someone more established or operating at scale. So I want to hear Mubasher bhai's insights there as well कि एक कोई international ब्रांड जो होता है that's operating at scale, उन्हें क्या मसले होते हैं किसी retail business में पाकिस्तान में versus a local वो. So that's been a low. Yeah, and what made me decide to leave it? So food business, again, all three other panelists would affirm this. उसमें you have to be hands-on. आपको 24/7, 24/7, you have to be part of the business. So yeah, I went to graduate school in the US, so I couldn't manage things remotely, so I took a back seat then. But yeah, and any advice for someone who wants to enter the F&B space, you need to put in time. It's a 24/7 commitment. Tanzeel is a close friend, but often we don't find enough time because he's just so busy, running the operation. So yeah, be prepared for it. Like you need to be really married to the business, if you want to do well in this space. And it's difficult to manage two marriages, right? बिल्कुल, You बिल्कुल. have an actual marriage as well, and then one with the business, so Yeah. it becomes difficult. ठीक हो गया. So coming to 2024, Tanzeel, क्या नजर आ रहा है from 60 branches to what, and other than the expansion part, और क्या चीज है जिस पे फोकस करना है as a brand? मेरे ख्याल से 2024 में हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ जाएंगे अभी. टॉकिंग अबाउट स्वीट क्रीम इन इटसेल्फ, ठीक है. हम लेकिन जब आप एक्सपेंड करते हो ना, तो आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो. एंड व्हेन इट्स अ रैपिड एक्सपेंशन, तो ऐसा नहीं होता कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, क्योंकि हमारा जो वर्क फोर्स है ना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं पे आपके जहाँ पे आपके ऑपरेशंस थोड़े से वीक होते हैं या आपके कंट्रोल्स थोड़े से वीक होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस सच एज करप्शन इन द सिस्टम, ठीक है, लीकेजेस, ठीक है, ये पिकअप करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वी फेस सम ऑफ दीज चैलेंजेस रिसेंटली. अब हमने उसके ऊपर काफी जबरदस्त किस्म के सिस्टम्स लगा दिए हैं. सो इट्स ऑलवेज अबाउट द सिस्टम्स. मेरे ख्याल से ये भी एक चोर पुलिस की गेम है. व्हेन यू आर इन द सिस्टम, तो ये आपने सिस्टम्स बनाते हो, आपकी जो वर्कफोर्स होती है वो ट्राई टू समहाउ वो वहां से उसमें से जो है कोई ना कोई लिवरेजेस निकाल लेती है. तो हम अभी तो इन द मीन टाइम लास्ट 2 मंथ्स हमने काफी कंसोलिडेट किया. सो वी डिडंट एक्सपेंडेड मच इन द लास्ट 2 मंथ्स. ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स वी हार्डली
है 2 आउटलेट्स मेरे ख्याल से हमने सिर्फ ओपन किया है, ठीक है। और हमने सिर्फ उसके ऊपर अपने सिस्टम्स एंड चेक्स बनाए हैं, ठीक है, टू कीप के हम एक जगह पे आके अपने आप को, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपको करना बहुत जरूरी है। सो यू पुट योर गोल कि अपने 10 आउटलेट्स करनी है, एंड देन यू से कि यार अब 10 के बाद हमारे और कहाँ से हम अपने कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो हम तो कंट्रोल्स की तरफ जा रहे हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, मैं बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा हूँ टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ आवर जो इन पार्टनरशिप विद आवर इंटरनेशनल वेंडर्स, हम पाकिस्तान लेके आए प्रोडक्शंस के ऊपर। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल या गोरा वेंडर होता है ना, वो हमेशा जो है ना इस प्रॉब्लम में आता है कि वो कहता है यार मैं पाकिस्तान, क्योंकि एक रेड फ्लैग स्टेट है, तो हम जो है ना डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको बिग फोर में से जो है ऑडिट करवाएंगे कि इफ वी आर गोइंग डू इट और नॉट, और वो हमेशा रेड में ही आती है। तो मेरे साथ ये पिछले 3 सालों से जो है कंटिन्यूसली लगा हुआ है। मैं उनको पुश करता हूँ कि यार हम ये करते हैं, वो करते हैं। वो जब वो करवाते हैं अपना ऑडिट, वो कहते हैं सॉरी, दिस इज द जो है डिलॉयट की हमारी रिपोर्ट आई हुई है, इट्स अ रेड फ्लैग, सो वी कैन नॉट कम हियर। आप जो है कहीं XYZ मलेशिया चले जाएं, UAE चले जाएं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद यू in the production of those particular stuff. And I always tell them कि यार अगर हमने उधर ही जाना है तो हमारा तो पाकिस्तान में तो फायदा नहीं है ना, ठीक है। So we want to do something good for the country, but the problem is कि वो इतने ज्यादा challenges है कि वो इतनी जल्दी मुझे लग नहीं रहा कि हम वो कर सके, उस चीजों को adapt कर सके, क्योंकि वो हर कोई अपनी investments को सेफ गार्ड कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो दिस इज समथिंग व्हाट जो हम देख रहे हैं कि हमने अभी थोड़ा सा ब्रेक करके अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है, पेस थोड़ी सी स्लो करनी है, और अपनी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको, क्योंकि हमने काफी टाइम से कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोकी हुई थी, विच नाउ वी हैव वर्कड ऑन, एंड वी विल बी इन दिस कमिंग इन दिस सीजन, तो वी विल बी लॉन्चिंग इंशाल्लाह ताला दोस प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक। मुबशर भाई, सबवे का एक ग्लोबल बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, चेंज ऑफ कंट्रोल हुआ, $10 बिलियन और $9 बिलियन की सेल हुई है। पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट आएगा उसका, एंड हाउ इज दैट शेपिंग अप योर 2024 प्लान फॉर द ब्रांड इन पाकिस्तान? या एब्सोल्युटली, पाकिस्तान के अंदर भी उसका चेंज आएगा, बिकॉज सबवे इज प्रीवियसली ओन्ड बाय it was not never been a corporation. It was owned by the individuals, two partners. Even though Subway के 43,000 locations हो गई थी worldwide, still it was one of the family owned business previously. So what has happened is, when now from the family-owned business, it's moved towards the more corporate structure kind of a thing. So absolutely, what is happening is across the globe, they are now moving towards the master franchise concept. At the moment, what is happening is that Saif was saying that big brands go. So Subway is a very unique model. In a Subway, what is happening is, so everyone can become a partner. They are, we prefer कि प्रोफेशनल किस्म के लोग, आपके एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट के लोग हमारे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आपके फ्रेंचाइजी बन जाएं. So this is something what we prefer to have our partners. So change क्या आएगा? Change ये आएगा कि it will become just like any other corporate kind of a structure in which there will be one person for the whole region or the whole country or something like that. It will be, and every branch will be owned by the same company or same group, but it will take some time. So having said that, about 2024 F&B sector, restaurant sector, I personally believe that sandwich sector should be showing very optimized kind of a outlook. Why? Because during the COVID time, what has happened is there was a paradigm shift. Previously, in our sector, sandwich sector, what was happening is the customer were coming and dining in more than going for a delivery. So we remember before COVID, there was around 13 to 15% delivery and takeaway orders. Now today in Pakistan, our is ranging between 40 to 45%, and in some areas it is more than 70% even. So it is giving us a leverage that we are reducing our capex, capital investment, and we are going towards the more smaller and smarter solutions. For example, in Pakistan, आपने बहुत ज्यादा ना पेट्रोल स्टेशन के ऊपर नहीं देखे होंगे. वर्ल्ड वाइड आपके पेट्रोल स्टेशन के ऊपर सर्वेज होते हैं. पाकिस्तान के अंदर सर्वे इज वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रांड विच कैन इजीली ओपन अप एनीवेयर, बिकॉज हमारा कोई गैस का या उसका काम नहीं होता.
So now Go has an agreement with us. So we are popping up our small location, very small location, tiny location, to take care of the delivery areas in the area with a low cost and low investment. And secondly, so this will give us some, freedom to go for a expansion with a limited investment and limited equipment. So this is 2024. We are believing that we should be doing good expansion, and we should be seeing the good uh, same restaurant growth as well. हम्म, हम्म, बिल्कुल ठीक। सैफ, अगर आपसे ये लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग, राइट? सो Right. आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केटिंग इज लगता ही है कि मार्केटिंग अच्छी हो गई तो ब्रांड चल जाएगा, लोगों को ये लगता है। तो अगर आपसे पूछें, इन द 10 ईयर जर्नी और 12 ईयर जर्नी दैट यू हैड, आपके ख्याल में व्हाट वर्कड, नॉट ख्याल में, लाइक व्हाट वर्क फॉर योर ब्रांड, व्हाट डिड Mhm. नॉट वर्क फॉर योर ब्रांड, एंड हाउ मार्केटिंग इवॉल्व्ड इन द लास्ट 12 ईयर्स? यानी जब 2013-14 में आपने स्टोर खोला, उस वक्त आप क्या करते थे, और 2021-22-23 में जब आपने एग्जिट किया, तो उस वक्त आप क्या मार्केटिंग कर रहे थे, एंड व्हाट वर्क फ्रॉम दोज थिंग्स? Right, right. So yeah, I think that's a great question. And perhaps I'm also not the right person to answer it, because essentially we started before Instagram, right? Before TikTok. And in 2024, that's where I see most marketing is. So we really didn't catch on that wave that coincided with the in waves of influencers and social media bloggers in Pakistan that perhaps occurred sometime in late 2010s, 2017, 18, 19 ke aaspas. So there's been like a great shift when it comes to how restaurants reach out and how they advertise. And probably there's a personal disconnect that I have with that. There's a generational gap there as well. But yeah, I think that's central. And I think like there are other panelists that can speak better on that particular topic. I think Johnny Jugnu's been great on that. My younger brother keeps on showing me the videos and the stories that they have running. So yeah, I mean, it's essential, right? Like in this day and age that you access these new forms of social media that are there. But I'd also add here कि I think जो ultimately जो आपकी खाने की जो quality है, that's what will drive customers ultimately. Of course, it will be augmented and can be augmented greatly by um, marketing. I mean, just a good, counterfactual is a burning brownie. I'm sure all of us have heard of the brand, local Islamabad brand, like been running for like 10 plus years. I don't think they've done a single paid Facebook ad ever in their 10 years plus journey, right? They're solely running on quality. I think Sweet Cream as well, if I'm not mistaken. I don't think इन्होंने कोई अब तक paid marketing, or at least मेरे उस पे नहीं है. So while we talk about marketing, right, there are success stories of brands that have just stuck to quality and succeeded. Burning Brownie, I think, has like 4 branches. They've opened in Lahore. I think they'll be opening multiple Yes. branches soon. And the entrepreneur behind Burning Brownie, he has other ventures as well. Similarly, just good word of mouth and sticking to the core, which is just providing good food. So that's something to think about. ठीक। सो गौहर, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब करते थे जब ये टर्म भी शायद नहीं आई थी 2014-15 में। मुझे याद है आपकी लॉन्च कैंपेन भी बड़ी वायरल हुई थी, लॉन्च एज एन राइट आफ्टर लॉन्च परहैप्स। तो टेल अस अबाउट दैट एंड हाउ दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, एंड यूर आई थिंक मार्केटिंग इज इन योर डीएनए, सो लाइक हाउ आर यू सीइंग दैट शेपिंग योर 2024 strategy? Which channels do you plan to use? Saif, well, actually, my opinion is very similar to what Saif mentioned. We've had a lot of viral hits over the years, but sort of har marz ki apni dawa, and you have to figure out if what the problem is, and then you have to find the right medicine for it. Um, as a brand, we've been focusing on being a pull-based brand as opposed to a push-based brand. 8 साल के अंदर, for example, I don't know how many brands are there in the market that have done this, but we've never given a price discount for a single penny. Like there's no buy one get one, two, three, whatever percentage off. Nothing about price, right? So once price is off the table in your marketing activities, you're left with very little things you can do. Um,
So our focus has been on building an experience for the people who are there, which is so good that they bring in more people. And that's the product service mix, just like Saf mentioned. I mean, अगर आपकी product amazing है, service अच्छी है, people will bring more customers. That's it, you know. I'm sure for at least 90% of the consumers that we have, they heard about us through somebody else. Um, I think कि दुनिया कितनी भी अच्छी पोस्ट आप बना लें और कितनी अच्छी टिकटॉक बना लें, it's not going to give you business again and again. The Pakistani market has no tourism, intercity tourism भी बहुत कम है, and then tourism तो है ही नहीं. तो आपने इन्हीं लोगों को खाना है, इनके बच्चों भी खाना है, राइट? सो जनरली टूरिस्ट मार्केट्स में एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता. इट्स मोर सॉर्ट ऑफ शो. अगर दिखा अच्छा तो कस्टमर अंदर आ गया, and that's pretty much it. But yahan you have to make money through these people on a weekly basis and for a number of years. So what's more important is that experience. If that's good enough, they'll keep coming in. That being said, I think marketing का अपना benefit जरूर exist करता है. It's to bring in a good footfall immediately, and generally restaurants, they're like an engine. You need to have the product available. It needs to be fresh. It needs to be on point. Your teams need to be trained, and then you need a lot of customers through the door. Once you have all of these three things in, आपका जो भी location है वो चलना शुरू हो जाती है. Throughput आ जाता है, employees engaged रहते हैं, customers को अच्छा service time, fresh product मिल रही है, and that cycle keeps on going. So if you feel like उस cycle के अंदर disruption है because not a lot of people are coming in, so you might do some marketing to get some customers through the door. But again, if the other two sides of it aren't ready, your product, your vendors aren't aligned, you don't have a fresh product coming out, आपकी teams aligned नहीं है, trained नहीं है, वो rush संभाल नहीं सकती, that's a very common thing. I mean, honestly, we still struggle with it as well when we open a new store. But अगर आपकी teams वो rush ही नहीं संभाल सकी हैं, या आपकी पीछे से supplier side से वो consistency है ही नहीं, तो फिर कोई point नहीं है. Like honestly, you're calling in people to give them a subpar experience. It's probably better कि उनको बुलाएं in the first place. Right, so it's marketing is just one part of the whole thing. बिल्कुल ठीक. So we will go beyond 5 p.m. a bit, but Saif has a hard stop at 5. So I have one question with Saif, and then I'll come back to the same question to Mubasher bhai and Tanzeel. Saif, question ये है कि पाकिस्तान का कौन से 2 या 3 brands आप देख रहे हैं जो international expand करेंगे? So I have been living in Riyadh for the last 1 year, and we see all sorts of brands coming in here. And it's very unfortunate to see that there's no Pakistani brand. So the Pakistani food that we see is there's no Pakistani brand, and then there is no Pakistani dine-in restaurant where I can take a guest to introduce them to our culture. There are plenty of, like, there are Lebanese restaurants, there are Jordanian restaurants, there are Indian restaurants, multiple, where you can taste that. So this is something very close to my heart in general. So, but this is a more question, a more sort of guess work. What do you who do you think will expand from Pakistan? Which brands, whether from this room or from outside, in the next 5 years? Right. So I think like we can break down your question to two parts, right? कि कौन से brands expand करेंगे and why they aren't like Yeah, more high importantly, कि quality क्यों नहीं हो रहा? Pakistani dine-in experiences in the Middle East, right? So I think when it comes to brands, let's just not talk about brand. Let's talk about like expanding beyond Pakistan, right? I'm not familiar with the Riyadh ki food market, so I think like Creme should be a good candidate. I think I live in Dubai. I think if they were to scale in the Middle East, I think they'll be successful, inshallah. So Which one? Sweet Cream is Sweet definitely Cream. one Okay. Yeah. because I think they've got the product mix, they've got the retail operations that are spot on. Uske alawa, I think it's a bit tricky because baki, like if you go into different cuisines, right? Like non-Pakistani cuisine, I don't think there's any that we are doing so well that doesn't have a market outside of Pakistan. Yeah, so that's one. If agar ek wild card ho, I think like Burning Brownie. I've not been able to find a good cheesecake in Dubai, and the ones that are there, they're like some really niche French bakeries. So his quality is spot on with like as good as any कोई French franchise जो कि दुबई के किसी high-end mall में. That could be a wild card. So उसके अलावा अगर कोई मेरे दिमाग में आता है, I'll share.
coming to your point, why we don't have like अच्छे Pakistani dining experiences. So there's a professor NYU की एक डिपार्टमेंट है जो फूड के ऊपर ब्रॉडली काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में आपको अच्छा इटालियन खाना मिल जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे सेकंड जनरेशन है इमिग्रेंट्स की जिनके पास पैसा है, जो कि वो अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपको न्यूयॉर्क में हाई क्वालिटी देसी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन ही है, उनकी सोशल मोबिलिटी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन आपको लंदन में मिशेलिन स्टार देसी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो सेकंड जनरेशन है और उनके पास पैसा है। तो अगर आप इसी को एक्सट्रैपोलेट करें रियाद में या दुबई में, some of the cheapest restaurants in Dubai are Pakistani restaurants because they're catering to taxi drivers. So this is, I think, a huge part of it. So it's surprising, like some of the most expensive Pakistani food that I've had. Like आप normally जहाँ भी जाए ना सस्ता होता है वो टर्की में, और टर्की में वो पाकिस्तानी खाना महंगा क्यों है? क्योंकि सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो खाना खाने, so उनकी purchasing power ज़्यादा है. So that was surprising for me, and I think that's one part of it why you don't have high-end dining options in Riyadh for Pakistani cuisines. और फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट आई थिंक है कि पाकिस्तान में भी कोई बहुत अच्छे एक्सपीरियंशियल नहीं है, सो हमारा कुजीन, हमारा जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उधर इवॉल्व ही नहीं की कि मिशेलिन स्टार पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो कोई पाकिस्तान में। तो जब वो होगा तो फिर आई थिंक वहाँ भी आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स द टू पार्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन। Because so Mubasher bhai, one thing I know about you and generally about people who manage Subway, they get to travel a lot and they go to a lot of conferences. So I think आपके जो दूसरे counterpart हैं इमरान भाई, उनसे मुझे पता चला कि 14 या 12 countries में आप Subway की conferences attend कर चुके हैं. So based on that experience, यानी what's really stands out in Pakistan as a market? Challenges की हमने बात कर ली, but is there anything good that we have या अगले 5 सालों में जो emerge होगी, the number of people, like could be population, could be anything, or just if not good, like what is different from other global markets that we have? यूथ बेसिकली हमारे जो यहाँ पे जो है वो ये कि इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद द यूथ और यंग जनरेशन, देन यू विल रॉक द मार्केट. अगर हम लोग बाकी देखें ना, अगर हम लोग लेट्स सपोज हम लोग वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, देन यू विल सी दैट द पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है तो वो ज्यादा जा रहा है टुवर्ड्स द मोर मैच्योर एंड द ओल्ड एज सेगमेंट. Here you have to be more creative, and in case you, just for example, I give you the example, there are so many smaller locations I have which are opening up in a community stores. We call it a community store, just like in Aski 11. No other brand can even consider to open up the store, international chain, in a community location like Aski 11, Aski 10, or in Multan, like Wabra Town. So what is happening? We are trying to connect with the youth so as they start owning our brand and they start thinking that this is their own store, own shop. So the difference what I really feel is between this and the other markets are that other markets you are connect with the youth, but I mean they don't own this way, because here the youth are very emotional, they are very connected with each other and they share their experiences. So in my opinion, and secondly, the sandwich market, especially this segment, is so untapped. This segment is so untapped that I personally believe that we can easily double our numbers here in Pakistan. We have not even, tried something deeper here in this market. There is huge potential there. ये चीज है. I think demographics पे youth का एक फायदा ये होता है कि then you acquire that customer for the next 30-40 years. Yes, अगर आप आज absolutely. उस 20 साल वाले बंदे को acquire करेंगे और अगर आप 50 वाले को acquire कर रहे हैं, then you have to worry about acquiring the same, like new customer, new segment of customers. In fact, we are trying taking into the schools as well. We are going into cookies catering and everything. And the way of response we are getting from the kids, and they're bringing their family in back whenever in the evening or the weekends. So I mean, this is something which just make our market different.
than the rest of the world. सही. कमिंग बैक टू माय अर्लियर क्वेश्चन तंजील, मार्केटिंग के बारे में, आपने कभी मार्केटिंग नहीं की, तो इसकी क्या वजह है? तो दिस इज वेरी क्या ये सच इंटरेस्टिंग. है कि आपने कभी मार्केटिंग नहीं की? आप मतलब यस, अगर हम 60 आउटलेट्स को रखें और अगर हमारा मार्केटिंग बजट 1000 पर आउटलेट हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको इसी तरह कह दें कि सच ही है. वो भी वो जो हमारी बस पोस्टें बना के कीप ऑन इंस्टा. मतलब ऐसा होता है कि अक्सर मेरे वेंडर्स मुझे भेज रहे होते हैं, तंजील भाई लास्ट पोस्ट आपकी 11 सितंबर को अपलोड हुई है, तो अब जनवरी 1 हो गई है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आप मार्केटिंग पे थोड़ा तो खर्चा करें. सो यस, हम जो लास्ट 2 महीने थे वी आर कंसोलिडेटिंग, तो हमने अभी इस चीज को मतलब फोकस करना शुरू किया. बट मेरा ख्याल है कि अब माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त गोहर ने भी बात की है, सैफ ने भी बात की, ठीक है, मुबशर भाई ने बात की. हमारी जर्नी बड़ी अजीब है. मैं उन सारी चीजों को इस तरह ड्रॉप कर देता हूँ. मैं जब सीजन होता है तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट्स ओवर सप्लाइड होती हैं, मतलब कि हम और लोगों को सर्व नहीं कर सकते हैं. तो उस टाइम तो मैं खुद मार्केटिंग वालों को बोलता हूँ, यार भाई कोई ज्यादा पोस्टर नहीं लगाना, क्योंकि हम सर्व ही नहीं कर सकते और हमारी कुछ सर्विस भी बहुत अच्छी नहीं है. सो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इट्स सर्विस इन इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि हमारा टेक अवे है और हमारा जो सर्विंग टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज रात को खाने के बाद 2 घंटे का ही हमारा एक पीक आवर लगते हैं. ठीक है, और उन 2 घंटे में हमने अपनी मेजर सेल्स को जो है कवर करना होता है, और उसी में डिलीवरीज भी हैं, उसी में डाइनिंग भी है, उसी में सब कुछ है. तो जब वो कस्टमर खड़े होते हैं और 10-10 12-12 बंदों की लाइन होती है, तो उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा कस्टमर को लाके अपने साथ ज्यादती करेंगे, तो उस टाइम मैं खुद रोक देता हूँ. अगर यार कोई पोस्ट अगर बनी हुई भी है उसको डिले कर दो, क्योंकि हम सर्व ही नहीं कर सक रहे. ठीक है, और जब हम सर्व नहीं कर सक रहे हैं तो इट्स पर्पसलेस कि आप एक्स्ट्रा लोगों को लाके उनको खराब करो. सो वी डिडंट मार्केट आज तक. बट यस, नाउ वी हैव थॉट कि यार नहीं, हमें जब आप ग्रो कर जाते हो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, तो आपको नया कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती. आपको एक मेन दोबारा रिमेम्बरिंग के लिए कि यार जो मेरा प्रोडक्ट है बस लोगों को पता हो कि यार क्या चीज़ है, ठीक है, और क्या चीज़ें हम देते हैं. ठीक है, तो वो उस सेंस में जो है हम मार्केट करना अब स्टार्ट कर रहे हैं. हम हमारी स्ट्रेटेजी अब ये है, और मैं तो गोवर भाई का आई एम फैन ऑन दिस. ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ यार अगर तो मार्केटिंग करनी है तो जॉनी जुगनू की तरह करो, वरना ना करो, ना हम वैसे ही कर रहे हैं. ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक. और मैं ये एग्जांपल राइट लेफ्ट और सेंटर हर एक को देता हूँ. इवन जो टीम होती है कहते हैं यार क्या करो, कुछ सीख लो भाई. ठीक है, मार्केटिंग कैसे कहते हैं. तो अगर तो मुझे क्लासेस भी लेनी पड़ी मैं आऊंगा इनसे लेने के लिए. आई एम ह्यूज फैन. ठीक है, आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट. अच्छा, ये तो एक चीज है, क्योंकि यूथ को जो जिसको मैं देखता हूँ वो यूथ, मेरा बेटा इज 8 years old. ठीक है, ही इज क्रेजी अबाउट जॉनी जुगनू. मेरी बेटी 5 साल की है, उसे कुछ पता ही नहीं पता, उसे जॉनी जुगनू पता है. ठीक है, तो दैट्स वेयर आई सी कि यार यस दे हैव हिट. जो उसको भी जो मैं समझता हूँ इनका टारगेट कस्टमर शायद ना हो. ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा बर्गर इनका नहीं खा सकता. ठीक है, वो हमारा टारगेट कस्टमर जरूर होगा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा. ठीक है, पर वो डायरेक्ट इनका नहीं होगा. इनका इनका जो होगा ज्यादा जो मैं बिलीव करता हूँ स्टूडेंट होंगे. ठीक है, जो कॉलेज गोइंग और इस तरह के या एफएससी या जो उस तरह के स्टूडेंट्स होंगे. तो खैर दैट्स वेयर इट. बट हम अब ऑब्वियसली बात है कि हम इसको कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी इम्प्लांटिंग, बट हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है. ठीक है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सारी चीजें हैं. बट मेरा बेसिकली मेरे ख्याल से जो मैंने आज पैनल देखा है, इसमें ये देखा है कि हम सबकी एक अलग स्ट्रेंथ है. ठीक है, सो माय स्ट्रेंथ इज ऑपरेशन. ठीक है, आई हैव केप्ट माय ऑपरेशन सो स्ट्रांग. ठीक है, ताकि मार्केटिंग हो नहीं हो, ऑपरेशनली मैं कंट्रोल में रहूं हर चीज के. गौर भाई की मार्केटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग फैंटास्टिक. और मुबशिर भाई तो खैर इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ हैं, तो उनको तो हम वैसे ही नहीं कम्पीट कर सकते. तो दैट्स वेयर इट इज. और कस्टमर मेरे ख्याल से अगर अच्छा प्रोडक्ट हो, कंसिस्टेंट हो, तो आता है. मतलब अगर हमारे पास आ रहा है अक्रॉस 60 आउटलेट्स और वी डिडंट स्पेंड अ सिंगल ऑन मार्केट, तो आई गेस इट्स बोथ वर्ल्ड एग्जिस्ट. आई थिंक इसमें एक इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है वो सेगमेंट का भी है. सो यू हैड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द सेंस के जो सॉफ्ट आइसक्रीम जो Acha, so होती है. yes, so we were among the first mover. JB's was the first mover, and हम्म. they came before us. That time I was doing my R&D, and alhamdulillah they have grown their path. ठीक है, अब उसके बाद और भी आ गए हैं, and the market is growing. And मैं हमेशा इस चीज को appreciate करता हूँ कि when the market start growing, ठीक है, तो एक competition के साथ एक market भी develop होती है. So around हम्म. me बहुत सारे लोग जो है ना ये
शुरू में मेरे पास आते थे जब मैंने स्टार्ट किया था, आई रिमेम्बर, तो मैं उनको बोलता था यार मैं तो अल्लाह चौक पे हूँ, आप डीएचए में खोल लो, आप गुलबर्ग में खोल लो, आप उधर खोल लो, ठीक है। तो फिर वो थोड़ी देर अरसे बाद आने लग गए, तो हम इन सारे एरियाज में हो गए। तो मैं उनको बोलता था यार अब लाहौर में ना खोलना, लाहौर तो मैं खा जाऊंगा, आप जो है ना फैसलाबाद खोल लो, सियालकोट खोल लो, इधर खोल लो, ठीक है। अब कोई मेरे पास आता है तो मैं उनको बोलता हूँ यार अब ना करो, इट्स अ रिस्की थिंग, ठीक है, बिकॉज द मार्केट इज नाउ मिच्योर्ड। दो तीन प्लेयर आ गए, और हमेशा दो तीन प्लेयर्स की ही गेम होती है, किसी भी सेगमेंट में आप देख लो, तो मेजरली प्ले गेम जो है वो दो तीन प्लेयर्स की होती है। उसके बाद आप जो है यू स्टार्ट कीप ऑन जो है लूजिंग आउट मनी फास्टर, बट एबनॉर्मलिटीज एग्जिस्ट। आई थिंक बर्गर्स जनरली सबसे competitive बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज जो हैं वो सबसे competitive स्पेस है, उसमें तो विदाउट मार्केटिंग सरवाइव करना मुश्किल होता है। और आई थिंक दूसरा, माय पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केटिंग लेट्स यू आप अपना रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड, वाइल ऑब्वियसली जिस तरह का सिस्टम है। सो या 60 डाउन द लेन इफ यू आस्क मी के हमने क्या नहीं किया एंड वी रिग्रेट इट, तो मार्केटिंग है, ठीक है। डाउन द लेन इफ यू थिंक, टुडे। यस, सो रीजन वाई, ठीक है, हमने शायद अगर जो 5 साल में रीच किया है, हम शायद वो 3 साल में कर लेते इफ यू डिड इट आवर मार्केटिंग वेल, ठीक है। मतलब अभी मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा कि यार आप अगर किसी न्यू मार्केट में जाते हो, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा यार हम पूरी मार्केटिंग थ्रॉटल के साथ आएंगे, बिकॉज हमें क्या इशू आता था, जैसे एज यू नो के हम आपके जहन में था हम 30 आउटलेट्स में हैं, ठीक है, वी आर 60, ठीक है। तो इस तरह क्या होता था कि हम किसी नए शहर में खोलते हैं एंड पीपल डू नॉट नो अबाउट अस, हम कराची गए तो नो वन नोज कि स्वीट क्रीम भी कोई चीज है, ठीक है, एंड वी वर 30+ आउटलेट्स ओवर हियर उस टाइम पे, ठीक है। नाउ वी आर 10 आउटलेट्स ओवर देयर इन कराची, ठीक है, in हैदराबाद, ठीक है। तो अब वो लोग जानते हैं क्योंकि हम बड़े लोकलाइज्ड हो जाते हैं। हमने फेस 4 में खोला था तो हमें जोहर टाउन वाले नहीं, मतलब वो लोग जानते थे, फेस 4 वाले नहीं जानते थे डीएचए में, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने डेवलप किया। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग गिव्स यू अ बूस्ट कि आपका कस्टमर जल्दी एक्वायर हो जाता है, कीप दैट कस्टमर, वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कीप कर सकते हो या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। I'll ask my last question to all of you and then we'll open up the floor. So for the attendees, I would request आप लोग अपने सवालात जो हैं वो chat box में please लिखना शुरू कर दें. And if there's anything you want to ask our panelists, technology in Pakistan, food technology, food restaurant technology की अगर हम बात करते हैं, all of you are well traveled, all of you have attended different events and conferences and have seen at least like 4 or 5 countries. I'm sure आप सब ने travel किए होंगे. What do you think it's different? क्या पाकिस्तान में जो food tech जिसको आम तौर पे कहा जाता है F&B tech, is it serving your needs? Like what do you expect from the technology providers? या वो नीड पूरी हो रही हैं और कहाँ पे गैप्स नज़र आते हैं, फ्रंट ऑफ हाउस, बैक ऑफ हाउस, क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको, उसमें क्या कहाँ पे रुकावट आती है नज़र? सो गौहर, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू. Well, for us, we've had a love-hate relationship with sort of the players that we work with locally. Gaps exist करते हैं, and Saif has left, but he talked about the fact that a lot of people sitting over here. When we started the business, the market and the industry was very different, right, from what it is today. It was a young market. There wasn't a lot of local players. International players की dominance थी, and hence आपके पास जो solution providers थे, partners थे, जो tech sphere में काम करते हैं, वो इतने ज़्यादा exist नहीं करते. There's a lot of, they started that part of the business very close to when all these young restaurants and operators were coming into the market as well. आज alhamdulillah, I think there's a lot of solutions in the market that have matured. Saif, we met many years ago English tea house पे नाश्ते पे. Both had a dream उस वक्त, we were talking about that. So look at mashallah where you are today and where we are today. So things have gotten better, and I think they'll keep getting better over time. The last like quick comment, what do you expect from the technology providers? Like what should they be focusing on? Or you're totally happy, like all of your needs are being met? जिस तरह No, suppliers absolutely not. की demand है कि कुछ Needs तो कभी meet नहीं होती, because all businesses sort of have their own requirements. Personally, I feel कि
थोड़ा सा हमें ये लगता है कि generally with the solution providers there's a lot of they're very rigid in terms of how they want to build the business or how they want to set the contracts up, and needs के अंदर थोड़ी ना हमें नजर आता है कि rigid है. um, and that becomes a problem for us because we want to follow things in a manner जिसमें हम उनको operate कर रहे हैं. चाहे वो आपके sort of order aggregators हैं या बाकी आपके service providers हैं, तो वो जो rigid systems होते हैं वो थोड़ा सा तंग करते हैं. But I think शायद आप उसके अंदर भी थोड़ी flexibility आ रही है. So I think that's the one thing जो इतना मसला है. But tech space में चीज़ें तो available होती हैं, but वो थोड़ा rigid हैं. वो ठीक हो जाए तो बाकी चीज़ें ठीक ही हैं. Sure. Tanzeel, आपने 60 branches run कर रहे हैं, controls भी build किए. Like, where do you see gap and what do you like? Where can what has worked out and what has not यार worked out? तो मेरे ख्याल से कि एज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ठीक है, तो टेक कंपनी भी ग्रो कर रही हैं साथ साथ. और पहले जमाने में मैं तो अभी भी देखता हूँ बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्कूल्स हैं जो बहुत बड़ी सेल कर रहे हैं, अभी तक वो नॉर्मल लेजर्स पे कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो मेरे ख्याल सब इवॉल्व हो रहे हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. ये क्योंकि फूड टेक्स भी स्टार्ट हो रहे हैं जस्ट टू कीप ब्लिंक. ठीक है, ब्लिंक से पहले हमें नहीं पता था कि हमने अपनी ऐप किस तरह करनी है. दैट वाज अ बिगर चैलेंज फॉर अस कि यार हमने अपना प्रोडक्ट इन और उसने हमें रेस्क्यू किया इसमें. एंड दे आर सर्विंग अस वेल, मतलब कि हमारे काफी सारे ऑर्डर्स वो निकाल लेते हैं. तो इस तरह ये है. बट एक चीज मुझे लग रहा है चैलेंज अभी जो आ रहा है करंटली एज वी आर ग्रोइंग, तो हम मल्टीपल डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम करें टेक्नोलॉजी में भी. बट वो सारे आपस में शायद नहीं करना चाह रहे हैं. वो उनकी जो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है ना, वो नहीं हो पा रही. और हम वो उसमें जो सफर कर रहा है वो ब्रांड कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ब्रांड चाहता है कि यार एंडलेस वो हो, क्या नाम, इंटीग्रेशन हो. ऑर्डर आए डायरेक्ट राइडर के पास जाए, वो खुद ही करे, एंड कस्टमर के पास उसकी लोकेशन आए और क्लियर हो जाए. ठीक है, बट वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस और उस पे महीने लग जाते हैं और वो सॉर्ट आउट नहीं होता. ठीक है, और आप सफर कर रहे होते हो कि यार, और आप कुड़ भी रहे होते हैं अंदर से, यार क्यों हो रहा है ये, भाई खत्म करो इसको, ये मेरा काम तो नहीं है. ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल विद टाइम ये भी ईज आउट हो जाएगा. जी मुबशर भाई. हम लोगों का असल में ना, बीइंग द इंटरनेशनल ब्रांड, सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंसेस ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेसी लॉज एंड एवरीथिंग. सो हम लोगों का जो इशू आता है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8 years back, so we have an option that either we need to import the POS from the USA, or if you want to do something locally. So there were so many privacy concerns of the data privacy breach and everything, because the laws which are getting implemented on the sub franchisee is from US laws, arbitration के. So हमें यहाँ पे challenge ये आता है कि there is a gap exists here in the market, because the government regulations are not that strong, which can protect the companies, international companies. So वो avoid करती हैं पाकिस्तान के अंदर कोई collaborate करने के लिए उन companies के साथ जहाँ पे वो उनको बाद में accountable ना कर सके. So eventually, how we, I got my POS locally developed, but the company was originally registered. They have the office in the UK, soil as well. So we got routed everything with their UK office. The technology is, here. So gap exist करता है 2 reason की वजह से. एक तो आपके यहाँ पे रेगुलेटर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना उनके लॉज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितना अर्सा हम लोग कोशिश करते थे कि ब्लिंक का हम किस तरीके से ऑन बोर्ड कर सकें, राइट. हमने अपने हेड ऑफिस को लिखा, सब कुछ किया. द प्रॉब्लम का चैलेंज कहते हैं कि हाउ द प्राइवेसी ऑफ डाटा विल बी इंश्योर्ड, एंड इफ इन देयर इज एनी काइंड ऑफ अ ब्रीच, हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट समवन इज हेल्ड अकाउंटेबल. सो ये इस तरह का गैप आता है. और सेकेंडली अनदर जो चीज मुझे काफी यहाँ पे फेस करनी पड़ी है, the readiness of the technology partner to understand your needs and to do the investment. They from the day first wants to earn money. They the day first they don't want to collaborate with you for the long term, because initially they have to invest, understand your needs, do the hit and trial, and then there will be the result. So बहुत कम यहाँ पे, maybe because of the many factors like a fixed cost, like a operation cost, like a overheads and many things, they wanted to do the break as early as possible.
सो इस तरह के थोड़े से गैप्स हैं। बाकी हमारा लोकल मार्केट में टेक्नोलॉजी के साथ इतना ज़्यादा मतलब रोल आउट या इंटीग्रेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि हम लोग चूंकि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, तो हमें वी हैव टू फॉलो व्हाट आर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड रोल आउट इंटरनेशनली। बिल्कुल ठीक। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चन। तो तंजील आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करने की कोशिश की, एंटिटीज को, जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, और व्हाट्स बिन द रिस्पांस? मुझे क्या पूछने की कोशिश है, वो पहले मुझे पहुंच जाते हैं। इट्स अदर वे अराउंड बट यस। सो प्रॉब्लम इज कि देखिए चैलेंजेस जो है ना वो मल्टीपल है, मतलब कि वो दे मूव फास्टर देन अस। मतलब कि पहले हमें लगता था कि शायद यार वो स्लो, गवर्नमेंट स्लो काम करती है, बट वो अपनी चीज के लिए बहुत तेज काम कर रही होती है। या आई हैव रियलाइज्ड ओवर हियर, ठीक है, वो डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे उनके लॉज हैं कि चीजें जो है वो हम भी हैरान होते हैं कि यार अभी तो हमारी आउटलेट खुली भी नहीं है और देयर लिस्ट ऑफ 10 डिपार्टमेंट्स की जो है हमें नोटिस आ जाते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। और से कि यार अभी तो लेट इट ओपन, कि पहला कस्टमर तो एंटर हो जाए, ठीक है, बट वो सारी चीजें आ जाती हैं। मेरे ख्याल से इसका यही है, और शायद इसी वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, कि आपको अपने जो है ना वो कनेक्शन स्ट्रांग बिल्डअप करने पड़ते हैं ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, या फिर एक पॉलिटिक्स उस पॉलिटिकल उसमें, ताकि आप जो है ना ये अपने जो इश्यूज हैं उसको स्ट्रीमलाइन करवा सको। हम तो खैर अभी उस फेज में नहीं है, हम तो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बट एज अ बिजनेसमैन आप जो कुछ करना चाह रहे हो तो वो गवर्नमेंट जो है वो आपको पहुंच जाती है, और आप देयर आर वेज जिसको मिटिगेट कर लेते हैं। सर अभी एक मैं आपको जस्ट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो रात 10 बजे वाला है, ठीक है, अब ये पिछले कोई 2 साल से वी आर ट्राइंग टू अप्रोच देम, ठीक है, कि यार इसको किसी तरीके से जो है वो करो, और वो उसमें इनसाइड एंड आउटसाइड ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो कुछ सही होने वाली नहीं है, मतलब कि वो लग नहीं रहा कि वो अगले 10 साल 5 साल में ठीक होंगी। हाँ, अगर तो हम उसको ये होता कि चीजों को रात को जल्दी सो जाएं और सुबह उठ जाएं, वो भी हमारी वो नहीं है, ठीक है। सो हम इज अ वेरी कंफ्यूज वो, बट गवर्नमेंट इदारे बिलीव मी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत तगड़े हैं, लगता नहीं स्लो नहीं है, वो बहुत तगड़े हैं। चले, बिल्कुल ठीक। गौहर आपसे क्वेश्चन आया कि कार्ड पेमेंट्स क्यों नहीं आप लोग एक्सेप्ट करते जॉनी एंड जुगनू पे? ये टैक्स की Yeah, कोई we चीज है get या ये भी those. कोई? No, actually, so if you pay through Food Panda, we accept cards. And moving forward, we're working on an application, and Wahabi will accept cards. The thing is that we don't want to accept cards for consumers where we don't get data. Card payments have a 2% premium on top, and we run on very low margins. So we're trying to add more channels जहाँ से customers pay कर सकें. That I do agree has been a problem. Food Panda is only a fraction of the entire consumer base. So delivery के customers के लिए that is available through Food Panda. They can pay through card, but for the people coming in, that's been a problem. So we're working on some channels. We're talking to you guys, but we're trying to figure out if we can have more channels open for customers where they can pay through card. We've been a bit slow, to be honest. Tech isn't something that, as an organization, we've excelled at. But we're trying to fix those things for us. तो ठीक। तंजील, हाउ डिड यू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी व्हाइल रैपिडली स्केलिंग इतनी थे प्रोडक्ट की, सर्विस की? सो यस, सर्विस इज अ बिग चैलेंज। मैं आई एक्सेप्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक अब इस पे ही रखा हुआ है कि मैं तो, यकीन करें, हमने लाखों लाखों के प्रोडक्ट ऐसे वेस्ट किए हैं जैसे हलवा है, ठीक है। क्यों? रीजन बीइंग ये है कि यार ब्राउनी में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, एंड द प्रॉब्लम जब हमने उसको बैक ट्रैक किया तो आप यकीन नहीं करोगे, पहले मुझे था कि यार शायद किसी किसी एक्स वाई जी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, हमने वन वे और द फिल्टर करना शुरू किया, एंड व्हेन यू नो कि यार इस ये जो बैच आज का बना है इसमें ये प्रॉब्लम वाकई में सफर कर रहा है, डिस्कार्टेड ऑल द ब्राउनीज, ठीक है, जितनी भी बनी थी, एंड इट्स इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो इस तरह के हमें जब भी कोई इश्यूज आते हैं तो हम उसको उस पर वेट नहीं करते, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि यार ये चीजें जो है ना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और कस्टमर को गलत चीज ना आ जाए। बट ऑब्वियसली बात है, 2 4 को तो जाती हैं तो ही हमें फीडबैक आता है कि यार ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अपॉलॉजीज। जो सर्विस है, यस, दिस इज द बिगेस्ट इशू। एज फार एज मार्केटिंग इज वन इशू फॉर अस, द सर्विस इज अनदर इशू, क्योंकि हम शायद अभी तक प्रॉपर ट्रेन नहीं कर सके, हमारा टर्न आउट रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लो स्केल एम्प्लॉयज होते हैं,
ये आते हैं, ट्रेन होते हैं, जब वो ट्रेन हो रहे होते हैं उसी दौरान उनको कोई 2 4 5 हज़ार की ऊपर ऑफर आती है, दे स्विच, ठीक है, और फिर वो एक नई ब्रीड आ जाती है और वो जो है कर रहे होते हैं। तो सर्विस इज द प्रॉब्लम जो हमारे कस्टमर फेस कर रहे होते होंगे। मैं कीप ऑन डूइंग मीटिंग्स विद द टीम एंड कीप ऑन टेलिंग देम कि यार आप जितना बेस्ट सर्विस दोगे, मैं तो उनको देखिए इंसेंटिवाइज करता हूँ कि यार अच्छी सर्विस दोगे अच्छी टिप मिलेगी, आपके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे, टेक अवे सोल्यूशन है, आपको टिप अच्छी नहीं मिलेगी, आप घर कुछ नहीं लेके जाओगे, क्या फायदा, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। बाकी अदर ये है कि टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ, फोकस करता हूँ। वी हैव वेरी ग्रेट सक्सेस स्टोरीज। द एक तो मैं पहले बोलता था, ये हमारा एक लड़का जो है वो नॉर्मल से जो है वो ब्रांच में लग गया। अब एक हमारा लड़के ने फ्रॉम एन ऑर्डर टेकर सेड सर मैंने इधर जाना है, एंड ही इज अमंग द टॉप टियर, ठीक है। सो दैट इज अनदर सक्सेस स्टोरी जो हमें वो किया। दीज गाइज मेक श्योर कि यार हमारी जो चीजें हैं वो सही हों, बेहतर जाएं आगे। और बाकी स्केल में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, फिर आपको एक कंसोलिडेशन पीरियड चाहिए होता है। एज आई टॉक बिफोर, हमने लास्ट 2 महीने पूरा कंसोलिडेट किया अपना सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे हमने इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व किए इंटरनली, एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 3 मंथ्स बहुत अच्छी जो सीजन आएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू द सीजन। तो जो हमारा सीजन आएगा वी विल बी मच बेटर देन लास्ट ईयर, यू विल सी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन किसी ने किया है कि रेस्टोरेंट्स अपनी प्राइसेस फूड पैंडा पे बढ़ा देते हैं और बढ़ा के रखते हैं। सो और उसकी वजह से जो है वो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि रेस्टोरेंट से डायरेक्टली ऑर्डर करना चीपर लगता है, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ लाइक ओनली बिकॉज ऑफ द दिस फैक्टर। तो आपके ख्याल में हाउ डू यू सी दैट एज इन गोइंग इन द फ्यूचर के ये प्राइस इंक्रीज जो है प्लेटफॉर्म्स पे या डिफरेंट चैनल बेस्ड प्राइसिंग जिसको कहा जाता है बाहर, तो वो होगी मजीद थोड़ी इसमें, या अभी और आप में से कोई कर रहा है या आप लोग सेम ही प्राइस होती है, चाहे कॉल सेंटर से करें, चाहे आपकी अपनी ऐप से करें, चाहे फूड पैंडा से करें, या प्राइसिंग में वेरिएशन रखी हुई है आप लोगों ने? तंजील। सो नो, स्वीट क्रीम तो एज अ बिगर ब्रांड वो ये नहीं करता, ठीक है सेम ना। हमने प्राइसिंग इस चीज अक्रॉस पे द बोर्ड? सेम प्राइसिंग है, यू गो फ्रॉम आवर ओन डिलीवरी ऐप, यू गो टू फूड पांडा। और दूसरी बात है, क्योंकि एज गोअर साइड हम भी जो है ना डिस्काउंट ब्रांड नहीं है, सो हमने भी आज तक 1 रुपए की डिस्काउंटिंग नहीं की हुई, ठीक है। एक आध जो हम डील्स अभी हमने निकाली हैं वो फूड पांडा के लिए निकाली हैं शायद, वो भी अभी रिसेंटली निकाली बिकॉज उन्होंने हमें मार्केटिंग लेवरेज दिया एक जगह पे, ठीक है। बट वो एक एक आप कहते हैं बाटर डील है, ठीक है। अदर देन दैट हमने कभी भी 1 रुपए की डिस्काउंटिंग, हम ऑलरेडी ऑन पूरे मार्जिन पे ही हैं, तो जी हम गौहर। तो ये नहीं कर रहे। सॉरी। Well, again, it's pretty similar. We don't have separate prices for separate platforms. Of course, food panda commissions or any order aggregator commissions are a bit high, and generally tendency होती है कि perhaps smaller brands or young brands वो फिर price parity लेके आते हैं, they're putting that commission onto the system because की अपनी food cost का एक issue होता है. It depends on how you see the aggregators. I personally believe order aggregators are great for brand disc. They have it's a marketplace. जो एक app खोलता है, for example, Foodpanda की app खोलता है, which लिए perhaps a lot of them might not open it for the fact कि उन्होंने specifically आपकी product खानी है. It's a marketplace, उसके अंदर आते हैं, वो options देखते हैं, फैसला करते हैं. So आपका brand discovery में वहाँ फायदा होता है. So if you use that, mentally, कि आपने उसको इस चीज़ के लिए use करना है, तो आपको वो commissions हर्ट उस तरह नहीं करते. इफ आपका बिजनेस खड़ा ही इस चीज पे है कि फूड पैंडा से ऑर्डर आएंगे, आप चलेंगे, देन यू गोना रन इनटू वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो अगेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी और आप उसको किस तरीके से व्यू कर रहे हैं कि आपको ये क्या करके देता है. जी मुबशर भाई, यू कैन नहीं चूज हम नॉट टू लोग आंसर अगर इसमें कोई। नहीं हम लोगों में तो बिल्कुल प्राइस का डिफरेंस बिल्कुल है विद द फूड पांडा एंड एग्रीगेटर एंड आवर डायरेक्ट डिलीवरी होता है इन dining. The reason behind is that from last 1.5 year, the margin overall because of the fixed cost increase, drastic increase in the fixed cost, and the food panda itself has increased the margins drastically. So it is practically not viable to go for a same pricing. It is not possible at all, financially or practically. So that is why it's a pure economical sense. It does not make economical sense if you have the same pricing. बिल्कुल। आई थिंक सो फ्रॉम आवर लर्निंग ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ आवर एरियाज। हम ये देखते हैं कि जिन ब्रांड्स की भी मेजॉरिटी, सो knowing sweet cream, it's not a delivery oriented brand per se, right? Ice cream ki delivery, although mashallah they do great orders, we know, because they use Blink.
But generally it still be like, I would assume 10-15% or even less than that delivery, right? So but Subway में वो delivery percentage जो है वो ज़्यादा होगी, and then their P&L affects significantly if that margin is not passed. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप इट वाज अ प्रोडक्टिव डिस्कशन। हमारी कोशिश यही थी कि हम बिहाइंड द सीन्स जाएं, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और टू द अटेंडीज वी विल बी शेयरिंग फीडबैक फॉर्म। प्लीज लेट अस नो व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दिस, व्हाट यू डोंट लाइक, did not like about this, so that we can improve. And we hope to conduct similar panels almost every quarter, inshallah. And any concluding thoughts? So Gohar, Mubasher bhai, one by one. Tanzeel, please. ये अच्छा, सो इफ आई स्टार्ट तो यार, नहीं मुझे तो मजा आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इनफॉर्मल सा बंदा हूँ। ठीक है, मैं जो है, मुझे तो मजा आया। ठीक है, और मेरे ख्याल से देखें, ऐसे प्लेटफॉर्म से ना हमें भी सीखने को मिलता है। सो फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग मुबशिर भाई, गोहर। मैंने नाम गोहर का तो काफी सुना हुआ है, क्योंकि गोहर और बहुत सारी जगहों पे हम बैठे होते हैं तो वो रेजोनेट हो रहा होता है। ठीक है, तो और माशाल्लाह, मतलब कि कंपोस्ट पर्सन है। ठीक है, जो बात कर रहे हैं। ठीक है, आई गॉट टू नो कि यार ये बंदा जो है उसी साइकिल से गुजरा हुआ है जिस साइकिल से मैं गुजरा हूँ। मे बी जर्नी डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो साइकिल्स आर सेम, जैसे सैफ ने बात की थी। ठीक है, देखो ब्रांच बनाना मेरे लिए इट्स नॉट अ वो। ठीक है, मेरे लिए यार वो जो पहली ब्रांच थी ना, दैट इज समथिंग जो बस वो उसी की गेम थी। मैं अभी भी, मुझे जो सबसे ज्यादा प्यार है वो अल्लाह से है। ठीक है, वो मेरी टेस्ट लैब है। अल्लाह इज आवर फर्स्ट आउटलेट। ठीक है, तो कभी भी कोई आके कहीं भी बोलता है ना, यार आप वो अल्लाह वाले हो, मैं कहता हाँ हम अल्लाह वाले हो। मतलब वो एक जमाने में हमने मजाक भी बना लिया था कि हम ना वो अल मशहूर अल्लाह चौक वाले लिखना शुरू कर दे अपनी ब्रांचों के साथ। बट खैर दैट इज समथिंग। तो इट्स अ गुड यार, मजा आया। आई नो यू, बट ये जो आपकी ऑडियंस है, ईद भी हमसे किसी को कुछ मिले, कोई क्वेश्चन हो कभी भी हो, आपके थ्रू या वैसे हमसे पूछ लें। ठीक है, मेरे ख्याल से हम थोड़े से वेल अचीव्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है हम। पर हम अपनी, क्योंकि हमें सीखने का कहीं से गाइडेंस नहीं मिली, हमने सारी चीजें खुद सीखी है। ठीक है, हमने ट्रायल टेस्ट किया है, हमने मुश्किलें देखी हैं, हमने आसानियां देखी हैं। बट हम अपने नीचे वालों को सिखा सकते हैं। जब मैं, जिस तरह पहले बताया कि मैं लोगों को बोलता था इधर खोलो उधर खोलो, उस टाइम सेंसली बोल रहा था। अब मैं बोलता हूँ ना खोलो, तो मन के पैसे बचाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में आप बाहर जाते हो, आपको लगता है यार पाकिस्तान ने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, अभी तक तो यार हम अपनी दालें नहीं बना सकते, दालें ही बना लो, छोड़ो और कोई काम। ठीक है, तो मतलब कि दालें उगाने शुरू कर दो, कुछ भी कर लो, इतना पोटेंशियल है कि हम तो अभी तक जीरो है। हमसे एक अदद सॉस नहीं बनती हमारी पाकिस्तान में। डिबेट इज वेरी गुड कि उन्होंने, दे हैव परफॉर्म रिमार्केबली गुड कि उन्होंने सॉस बना ली, पर हमारे जो कन्फेक्शनरी आइटम्स में उन हम तो एक सॉस भी नहीं है। ठीक है, हम न्यूटेला की कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम अच्छी कॉपी नहीं बना सके अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है ना, हमारी कुछ और सॉस है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें वी कैन डू। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्यूचर के, एंड इंशाल्लाह दे विल वर्क वेल, हम गाइड कर सकते हैं। थैंक यू तंजील जी। गौहर, क्या कहना चाहेंगे? Well, sir, again, थैंक as as I said earlier, it's a great session. It's nice to meet people from the industry, have that chat. I think unfortunately we weren't able to answer a lot of the questions that we got in the comments. So if people would be comfortable, they can drop me a message on LinkedIn. I don't promise I'll reply anytime soon, but I do promise that I किसी ना किसी दिन जरूर reply कर दूंगा. I have a feeling that a lot of the people here in the chat are uh, business owners that have just started the business. And if that's the case, so जैसे तंजील भाई ने बात की, you have a special place for also the people who are going through the same journey as well, right? आप वो एक ही जंग से निकले होते हो, तो फिर आपको एक उसका एक फीलिंग होती है, and you have regard for people जो उस stage of the journey में भी हैं. So for anybody like that, we'd be very open. I'm sure Tanzeel bhai would also be available. Mubasher bhai would be available as well. So baki questions, maybe we can do it there. But great to finally catch up with you guys. I'll keep bothering the panelists as well afterwards. यू। ठीक जी मुबशर भाई। No. It was indeed a very good session, because honestly speaking, from last 14, 15 years, I have never seen some sessions like this happening in this restaurant industry. We don't call we interesting part is Pakistan में restaurant को अभी तक industry का status नहीं दिया गया. It's still not an industry. However, it is, अगर आप employment की ratio देखो, it is the third largest employment generating entities here.
So no doubt, Sahib, it's a very good initiative. It was pleasure meeting everyone, and I hope the same kind of a session will keep going, and it will be really helpful for others as well. Chale ji, thank you. Thank you to all the panelists and all the attendees, and lovely having you. And we hope to see all of you again